certain important factors. So in the second session, I'll उसमें सबसे important वाली बात क्या है, अपने क्लास को effective mode पे, impactful, engaging, interesting and challenging mode पे करने के लिए what are the efforts are required to be done. उसमें से then I told you one first and foremost thing, you must be a good subject expert and you must be having good ICT skills. One of the ICT skill which I demonstrated to you is to search the content from the digital initiatives of Government of India and in the higher education. Okay, there is one more thing which is very, very important is about the एक तो मैंने कहा था कि searching the content from the digital initiatives of Government of India, second one for digital initiative of the state government, and third thing is digital initiatives of the national and international institution, and last में मैंने कहा था open educational resources. So हमें please confirm my voice is reaching to all of you. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, audible, sir. Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. Yes, sir. So what I'm trying to say, मैंने okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So what I'm trying to say that this is again a new option, open educational resources. हमें तो ये जानकारी चाहिए और what is important is, can I request one of the participants to read the policy statement on OER? कोई भी पढ़ सकते हो. Yes, sir. परवीन जी पढ़ लीजिएगा. National Education Policy 2020 recommends the development and use of open educational resources that can be freely accessed, reused and modified by anyone. This can help reduce the cost of education, increase access to learning resources and promote innovation and collaboration. Thank you, Parveen ji. So यहाँ दो important बातें हैं that can be first of all they said the development and use of OER. So मैं development की बात नहीं कर रहा हूँ. So I'll be talking about how to use the open educational resources for which what are the learning outcomes of the session. So यहाँ तीन important चीजें हैं. First of all, first one is understanding the OER. What is the open educational resources? Second important thing is understanding the Creative Commons attributed licenses and all. So ये second important point है. और third important factor ये है how to use the और कहाँ से ये available है, कैसे use करेंगे. Okay. So first and foremost thing, let's try to understand what is this OER is all about. अब OER का definition एक बार आप देख लीजिएगा. They are the digital materials freely offered freely and openly to use and adapt for teaching, learning, development and research. ठीक है. और इसके अंदर क्या कौन इसको यूज करेंगे? इंस्ट्रक्टर्स यूज कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, एंड सेल्फ लर्नर्स आर यूजिंग दिस मटेरियल. ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट और क्या चीज इसके साथ अवेलेबल है? फुल कोर्सेस, कोर्स मॉड्यूल से लेके सब कुछ अवेलेबल. यहाँ एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाता हूँ. सो व्हाट इज दिस क्रिएटिव कॉमन्स? बार इसका कह रहे हैं. एक तो हमें पता है कि कॉपीराइट, और ये क्रिएटिव कॉमन्स कहाँ से आ गई? ओके. यहाँ एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ. मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को एक बार सुनने. Have you ever wondered how to download and share digital content legally? How do you let people know that you want them to reuse your own work? Yes, sir. Creative Commons licenses can help you do both. We'll show you how. Our world's exploded with digital opportunities. Now we can communicate, share, and work together using the exceptional distribution network that is the internet. Information and content can fly between us in exciting new ways. But it's important to know that when something is created, say a photo, a document, or a music track, it's automatically protected by copyright. Copyright enables people to say who can share and reuse their creations. You must always obtain someone's permission before sharing or reusing their work, even when it's posted online. But what if a creator wants everyone to use their work without the hassle of granting permission over and over?
This is where Creative Commons can help. Creative Commons provides licensing tools that are free to use. You can apply a license to your work, which refines your copyright and streamlines how you give permission. Zach here downloads a photo called CC Kiwi that he wants to use in his science project. He can do this without asking Kiri, the photographer, first, because she's already given permission with a Creative Commons license. Kiri's license is legally robust, but easy for Zach to understand. She's told the world, including Zach, that they can use CC Kiwi as long as they acknowledge her as the original photographer. There are more rules Kiri could have included. Creative Commons licenses are made up of license elements. You can think of them as rules, and each have their own special symbol. This is attribution. It means that Zach must acknowledge Kiri when he publishes his science project containing her photo. This is non-commercial. It means no one else but Kiri is permitted to make money from CC Kiwi. Tim wants to print the photo onto T-shirts and distribute them to friends. He can do this, but he must not sell them. This is no derivatives, and it means that Kiri hasn't given permission to change her photo. Kate can use CC Kiwi on her design blog, but will need to ask Kiri before retouching or mixing up the image. And this is share alike. It means new creations that use CC Kiwi need to carry the same license. Jack incorporates his own remix of CC Kiwi in his video installation, but he must share the work under the same terms that Kiri has. Each Creative Commons license gives permission to share and includes the attribution rule. So people who find your Creative Commons licensed work are automatically allowed to share it, but are required to acknowledge you if they do. The other three license elements are optional, and you can choose which ones to add, if any. Here are the 6 combinations that make up Creative Commons licenses. The difference between them is how many rules apply when someone wishes to use your work. The attribution license allows reusers the most freedom, and the attribution non-commercial no derivatives license allows the least freedom. The attribution license and the attribution share alike licenses are sometimes referred to as free cultural works approved licenses. These 3 licenses restrict commercial use of a work. And these 2 licenses do not give permission for adapting or remixing. These 2 licenses require new works to be licensed under the same terms. To choose and apply one of these licenses, and to view their terms in more detail, visit us at creativecommons.org.nz. Or you can answer some questions to help you decide which license best suits your needs at creativecommons.org/choose. There are some good ways to find other people's Creative Commons licensed work online. You can use a search filter by going to the Creative Commons website. Or why not try the Jamendo website for music, Flickr for images, or Digital NZ for New Zealand content. Using Creative Commons licenses could help your creations reach more people. Maybe you want to connect with others across the globe and take turns at improving a report. Or maybe you just want to have fun, remixing someone else's work. Whatever reason you have to share your work, you'll find there are scientists, educators, companies, and public agencies who are using Creative Commons. By opening up permission, just imagine how much we can achieve. Collaborating on what we hold in common, being open about big decisions, and finding solutions in the spaces between us. Let's work together, confidently and legally. It's good to share with Creative Commons. Okay. So what I'm now after this small video, I'm going to show you that what are the other things we can able to do with this one. Now I request all the participants to note down this picture also. This is on open educational resources, and I'll be giving you some practical exposure on this, and we'll be doing some practice also in this regard. Please take a snapshot of this, and if you have any WhatsApp groups, please post this one in your WhatsApp groups.
ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कुछ चीजों को हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे. ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER can be accessed through three options. One is YouTube filter, second one is Google advanced search, third one is CC search. Okay, अब YouTube filter लगा के OER मटेरियल को कैसे एक्सेस किया जाता है. ओके, मैं वही चीज पहले दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको समय दूंगा. देन यू आर कंप्लीटिंग दैट. Point number one, first of all, step number one is open youtube.com. Step number two is यहाँ सर्च ऑप्शन, यहाँ एक सर्च ऑप्शन है. इस सर्च ऑप्शन में आपको अपने सब्जेक्ट का कीवर्ड्स डालना है. सो मैंने कीवर्ड डाला, मुझे चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. ओके, मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की. सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, प्लीज दोबारा से बताएंगे इसको. हाँ मैडम, देखिए मैंने ये कहा था मैडम, अभी आपने कहाँ से नहीं सुना. ये इसके स्क्रीन को यहाँ से देख, ये तो आपने देखा. सर एक्चुअली हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, ये स्क्रीनशॉट हो गया था. देन हाँ, इस स्क्रीनशॉट हो गया ना मैडम. स्क्रीनशॉट होने के बाद मैंने कहा था अब आप YouTube एक बार ओपन करने के लिए मैंने कहा था कि यहाँ YouTube एक बार ओपन, क्योंकि YouTube में से YouTube फिल्टर को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बताने जा रहा हूँ. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ जो है ना, ये सर YouTube ओपन किया था मैंने. YouTube ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में मैं टाइप करूंगा आपके जो सब्जेक्ट कीवर्ड्स है. मुझे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कुछ चाहिए. मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिख दिया था. कंप्यूटर फर्स्ट स्टेप है youtube.com. सेकंड स्टेप है सर्च बॉक्स में कीवर्ड्स लिखना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. आप अपने सब्जेक्ट का भी लिख सकते हो. और यहाँ देखिए सबसे ऊपर जो है सर्च फिल्टर्स करके आ रहे हैं. ये फिल्टर्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया था. क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे फिल्टर्स है. एक तो अपलोडेड डेट के ऊपर फिल्टर लगा सकते हो, टाइप के ऊपर फिल्टर लगा सकते हो, और ये आर नहीं मैडम, एंड है, अलग अलग लगा सकते हो. फीचर्स में ना एक क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर है. सो क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया था. तो क्या हुआ, ओनली इसमें देखिए अब ये वीडियो आ गई. ये वीडियो अब देखिए मैं क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर है कि नहीं. Everything you know about getting a job in Europe, Canada or Australia is a big lie. Are you a working देखिए ये वीडियो है क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर है. सो इस वीडियो को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है. नंबर 1 मैंने क्या किया था, youtube.com ओपन किया. नंबर 2 मैंने क्या किया, सर्च बॉक्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया था. आप अपने सब्जेक्ट लिख सकते हो. और तीसरा मैंने क्या किया, फिल्टर में जाके उसको फिल्टर्स अप्लाई किया था. फिल्टर्स में फीचर्स के अंदर क्रिएटिव कॉमन्स, ताकि YouTube में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कीवर्ड के अंदर जो वीडियोस है वो वीडियोस आपके स्क्रीन पे तो आ गया. ठीक है, और यहाँ इसी तरीके से वीडियो को ढूंढा जा सकता है. आपको मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ. आप पहली बात है आप वीडियो को ढूंढना है. वीडियो को ढूंढने के बाद आपको मैं यहाँ आपके चैट बॉक्स में लिख के दे रहा हूँ. इसी तरीके से आपको बताना है. नंबर 1 मैंने कहा था फर्स्ट आपको मुझे चाहिए कीवर्ड्स. आपने कीवर्ड्स एंटर क्या किया था. नंबर 2 कीवर्ड्स एंटर किया था. उसके बाद मुझे चाहिए वीडियो URL. ओके, आपने कीवर्ड्स क्या एंटर किया था. उसके बाद देन URL क्या है, लाइसेंसिंग का जो है. जो आपको मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ. आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू काइंडली check this information like I have mentioned over here and post it in the chat box. Okay, ये फर्स्ट ऑप्शन है. उसके बाद बाकी सेकंड ऑप्शन को मैं बता दूंगा. ये YouTube फिल्टर को करने के ऑप्शन है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कर लीजिएगा प्लीज, मेक इट फास्ट.
सर ड्राइव कर रहे हैं तो अभी पॉसिबल नहीं है 10 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक।
ओके, लेट्स मूव फर्दर। आपको मैं एक और चीज अभी दिखाऊंगा। अभी तक हमने जो किया था यूट्यूब फिल्टर को कैसे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके उसके नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गूगल एडवांस सर्च। ये गूगल एडवांस सर्च को कैसे यूज किया जाता है। ओके, ये गूगल एडवांस सर्च को यूज कैसे किया जाता है। गूगल एडवांस सर्च के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए, आपको आपके जो ब्राउजर में आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल एडवांस सर्च। ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स स्टॉप डूइंग इट, ओके, एंड फोकस ऑन व्हाट आई हैव बीन सेइंग। गूगल एडवांस सर्च को ओपन करेंगे। गूगल एडवांस सर्च को ओपन करने के बाद देखिए यहां देखिए एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस सर्च ऑप्शन। ओके, एंड एडवांस सर्च ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, एंड उसको एक बार इसमें गूगल एडवांस सर्च के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपके स्क्रीन पे क्या चीज आ रहा है। एक टेबल आ जाएगा। यहाँ सबसे टॉप में आपको कीवर्ड्स लिखना है, यहाँ लिखना है। इसमें लिखेंगे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम मुझे चाहिए। ओके, और आखिर में देखिए बहुत यूसेज राइट्स में देखिएगा इसमें लिख के आ रहा है नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस। मतलब हमें तो क्रिएटिव कॉमन्स का कंटेंट चाहिए। तो इफ यू वांट यू कैन यूज फ्री टू यूज और शेयर इवन कमर्शियली, फ्री टू यूज मॉडिफाई। तो मैंने फ्री टू यूज और शेयर का ऑप्शन सिलेक्ट किया था। पहली बात मैंने क्या किया, गूगल एडवांस सर्च ओपन किया। एडवांस सर्च ओपन करने के बाद एडवांस सर्च ऑप्शन ओपन करने के बाद दो इंपॉर्टेंट बातें तो इसके अंदर लिख के आ रहे हैं, और ये वो है सबसे पहले ऑप्शन जो है आपका कीवर्ड्स आपको डालने का है, और बाकी सारी चीजें एक बार आप देख लीजिएगा। यूसेज राइट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यूसेज राइट्स में इसमें लिख के आ रहे हैं फ्री टू यूज और शेयर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन यू कैन गेट डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो, फ्री टू यूज और शेयर समथिंग। सो मैं फ्री टू यूज और शेयर क्लिक करके एडवांस सर्च क्लिक किया था मैंने। अब देखिए फ्री टू यूज एंड शेयर में तो आपको पता कैसे चलेगा, और मैं इसको ऐसे आगे लेके जाऊंगा। आगे लेके जाने के बाद देखिए यहाँ मेरे लिए एक स्प्रिंजर ओपन के जर्नल की किताबें दिख रही इसमें। ओके, स्प्रिंजर ओपन वाले में तो दिख रहे। तो इसमें क्या है कि इसमें आ रहा है था फ्लिप्ड क्लासरूम इन हायर एजुकेशन। ये देखिएगा, ये है स्प्रिंजर ओपन, और ये जर्नल का नाम है इंटरनेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन, और ये आर्टिकल का टाइटल है, और ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सबको समझ में आना चाहिए वो ये है, सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, वो ये है। उसमें जाके देखिए, सो दिस आर्टिकल इज लाइसेंस अंडर Creative Commons, which permits use, sharing, adaptation, distribution, reproduction of any medium, as long as you give the appropriate permission to that. ठीक है, तो मैं अभी आपको इसके ऊपर कुछ 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूं। अभी आप गूगल एडवांस सर्च को यूज कैसे किया जाता है। ओके, यू डू इट फास्ट, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गूगल एडवांस सर्च को यूज कैसे करना है वो एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो चीज आपको, अच्छा, यहां जब आप पेस्ट करेंगे आपको करना है सब्जेक्ट, आर्टिकल का नाम, आर्टिकल का लिंक। देखिए आपके चैट बॉक्स में 3 चीज आपको लिखना चाहिए। मेरी बात है, फर्स्ट वन है सब्जेक्ट, नंबर 2 टाइटल ऑफ द आर्टिकल, नंबर 3 लिंक ऑफ द आर्टिकल। ओके, ये 3 चीज। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। चल गया। हाँ,
Good evening, sir. Okay. ओहो, सर आपने बताया था कि आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था फ्री टू यूज। मैडम एक बार आप चेक तो कर लो, उसके बाद मैं अर्जेंट एक फोन कॉल में हूँ, आप जल्दी देख लीजिएगा एक मिनट। हाँ ओके ओके। ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే అయితే మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే మాకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఇష్యూగానే ఉంది, లేకపోతే నేను ఇప్పుడు అడుగుతాను, నేను ఇన్ కేసు ఎవరో దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసేద్దామా అని. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే చెప్పండి, అంటే అంటే అలాగే దీని ప్రాబ్లం ఏంటంటే మళ్ళీ వేరే డేట్స్ అనేది. Sir, Shriniwas sir, you can mute the mic. ఒక నిమిషం. Sorry, madam. Yeah. No problem, sir. Actually, you were talking, so that's why I thought you must have forgotten. Okay, I think you people have completed the activity. I want everybody should do the needful as such plans. Yes, sir. Okay, so the first activity हमने क्या किया था, YouTube से कंटेंट को ढूंढने का कोशिश किया था और Creative Commons का कंटेंट को ढूंढना था, वो that is completely video material.
इम्पोर्टेंट थिंग हमने जो ढूंढने की कोशिश किया था वो टेक्स्ट मटेरियल है, और वो गूगल एडवांस सर्च से कंटेंट को ढूंढने का कोशिश किया था. दैट इज सेकंड इम्पोर्टेंट ऑप्शन. एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ टू सर्च द कंटेंट फ्रॉम द again from the some of the wonderful resources as such given over here. तो ये रिसोर्सेस भी मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, एक 2-3 रिसोर्सेस आपके लिए मैं ऑलरेडी बना के लाया था मैंने, तो उन्हीं वही रिसोर्सेस को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे. ओके. एंड देखिए आपके स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा मैसेजेस आपका लिखा था. सो सीसी सर्च के ऊपर जो है ना, आपको सीसी सर्च का मैं 2-3 साइट्स आपको देता हूँ, और उस साइट्स को ढूंढने की कोशिश कर लीजिएगा. ओके. एंड देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स आल्सो. वारक. So there are some important sites also, though I will be sharing those sites over here. One of the important site which is interesting and important for us is OER Commons. OER Commons के नाम पे एक साइट है. ओके. OER Commons के नाम पे एक साइट है. उसमें से आप देख लीजिएगा आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाला. OER Commons के नाम एक साइट है. एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज ओपन लर्न. आई थिंक ओपन लर्न भी ऑलमोस्ट वर्किंग है, और ओपन लर्न को भी एक बार ढूंढ लीजिएगा. ओपन, ये सारे सीसी सर्च की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएटिव कॉमन्स सर्च वाली साइट्स है. वो है ओके. ठीक है. राइट. आपकी आईडी से ईमेल और व्हाट्सएप. ईमेल कर दीजिए. आपको ईमेल व्हाट्सएप पे भेज देते हैं. मैं कर दूँ. ठीक. और ये कुछ साइट्स है इस तरीके का, और मैं आपको और भी दिखा दूंगा. कुछ और साइट्स भी है, काफी इंटरेस्टिंग साइट्स है. इस साइट से भी आप कंटेंट को, काफी अच्छा खासा कंटेंट को ढूंढ सकते हो. एक साइट ऐसा है, 2-3 साइटों को मैं आपको दिखा रहा हूं अभी. एक मिनट. ये 2 साइट्स तो इम्पोर्टेंट तो है, और इसके अलावा मैं आपको, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. बिना इस कॉम्पिटेंसी का आप कई सारे चीज को कर भी नहीं सकते हो. और इसमें अंदर कुछ साइट्स में दे रहा हूं. एक साइट का नाम है कोल कॉमन्स, COL कॉमन्स है. एक और है coalcommons.org. ओके. इसमें coalcommons.org, इसमें ओके. एक coalcommons.org एक और साइट है. और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग वाली साइट है, उसका नाम है ओपन टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी. यस, ये चारों कर लीजिएगा आप बस. उसके बाद एक और है, इसके नाम ओपन टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी. ओके. राइट. तो ये इनमें से अभी देखिए मैं आपको OER Commons एक साइट का नाम है, ओपन लर्न एक साइट का नाम है, coalcommons.org एक साइट का नाम है, ओपन टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी. इसमें से आपको क्या करना है कि ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश कर लीजिएगा. इसमें मैंने लिखा था सब्जेक्ट सर्च. आपके सब्जेक्ट ही लिखोगे, कौन सा टॉपिक आपने सर्च किया था. ओके. और सोर्स एंड लिंक भी आपको यहां लिख दीजिएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ द रिसोर्स. ये कोई बेसिक है, एडवांस्ड है, एप्लीकेशन लेवल का है.
या उसके बाद कॉन्सेप्ट, आइडिया, स्किल, टाइप ऑफ द रिसोर्स, आपको क्या क्या मिला था। और इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा, कॉपी, ओके। ये पॉइंट नंबर 3 रहेगा, ये पॉइंट नंबर 4 रहेगा, ये पॉइंट नंबर 5 रहेगा, ये पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट नंबर 7। Okay, I request all the participants, please do this one. And उस नीचे सबसे important कुछ remarks मैंने लिखा था, and इस remarks को थोड़ा सा करने की कोशिश कर लीजिएगा, मैं इसको कम बनाता हूँ। Now please see that my screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. अब आप देखिएगा, इसमें ये इन चीजों को एक बार एक्सेस करने की कोशिश कर लीजिएगा। ओके, और मतलब चारों साइट्स को ओपन कर लीजिएगा। मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूं ताकि हमारे पास समय, ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, ओके। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, डू इट।
Please make it fast. Another 4 minutes I'm giving to you to complete this activity. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಸ್ನಾನ Okay, now I think, shall we move to the next part of it? Because we have a limited time up to 5 o'clock. And so, but my request to all of you is please ensure that all these things need to be done on a regular basis. Okay, now we talked about the video. We learned how to do it, and there are certain things which we can able to use it also. And as far as the there is one small interesting thing which I just thought of sharing with you is about the blended mode of teaching. See, where we are going to use these videos and where we are going to use this content. This content can be used in a conventional classroom teaching, and this content can be used in blended learning environment. So we have already created one small video about the blended learning. I want of sharing with you the video, and please watch the video for a few minutes. And very important, see what exactly we want to do. It's not connecting the two things. इसको करना क्या है? एक बार ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा. And I'm not running the entire video. मैं few minutes We all are discussing about blended learning today. इसकी आवाज आ रही है? University teachers, college teachers, experts in the field, and even students
Right. are Listen thinking what kind of blended learning is expected. We are not here to discuss the term blended learning. Let us see about blend. Let us discuss about blending. I have a series of questions for you. Please see these two images and see which one you like more, A or B. If you have answered, let's proceed. Now, which image do you like more, A or B? Hope you have answered. Now, which image do you like more? Again, A or B? Of course, there might be both kind of answers. Some may like A, some may like B. I recently checked with a group of teachers and majority answer was B. But some may say, I like both. If you are liking majority of B answers, then blend is beautiful. Blend of colors. It's not a mix. It's a blend. Blend is more aesthetic. Blend is more beautiful. And meaningful blend is more beautiful. If you have liked this image the most, then let's say we should aim for a meaningful blend. We should aim at beautiful things. Can my class be so beautiful? If we are talking about beautiful images, beautiful photographs, beauty in the nature, why can't my class also be beautiful? What could we do to make our class beautiful? And by beautiful class, what do I really mean? By beautiful class, I mean look and feel of the class, learning experiences, learning material, classroom organization, group formations in my class, interactions with learners, and even peer interactions. Can we make all this beautiful? Then the answer is yes. We can make our classes beautiful by a meaningful blend. Let us relate our images to our classroom situations. Straight lines versus curve. Which class do you like more? In which class do you think there will be more interaction? Peer-peer talk. Eye contact with each other. Let's move to more meaningful blend. Let's not just stop at eye contact. Let's have close interactions among our learners. Will that make more meaning into learning? Will their learning be more meaningful? If yes, let me blend my class meaningfully. We have discussed about what kind of blend is beautiful. Now let us see blend of what. What do we really mean by meaningful blend? Does it imply dividing our syllabus into online and offline? Does it mean teaching half of the syllabus or 60% of the syllabus or 80% of the syllabus in classroom and remaining online? What it really means? Blended learning is not dividing your syllabus. Blended learning is blending learning experiences. If we really divide some syllabus through online and some on campus mode, then also the situation is not really going to be good. Do we claim that either of the modes is more effective than the other? Then it's not so. Overuse of online learning is considered as a bad experience throughout the pandemic. Have we ever thought effect of continuous lecturing and one-way communication with our students
from 10 a.m. till 5 p.m.? Whether we use technology or not, could we move towards more interactive situations, more interesting situations, more meaningful learning experiences? If we are talking about online environment, is it possible to think beyond lecturing? Is it possible to think about some applications which are interactive? If we are talking about classrooms, then could we think about peer-peer interactions, some innovative strategies which will keep our learners engaged in learning? So is it really about technology versus pedagogy? Or could we integrate technology for an effective pedagogy? So let us think of meaningful blend of modes of communication. Teacher may talk to the class sometimes. Teacher may conduct discussions. If we are planning for interactions among learners or between learners and technical device, if we are planning to use smartphones as mode of communication, can we have a proper blend instead of depending on only one mode of communication? Could we judge which mode of communication is more suitable for which part of the topic and not of the syllabus? Could we think of meaningful blend of teaching learning experiences? We can plan for a range of teaching learning experiences, some technology based and some without technology. We have AR, VR with us. We have labs for hands-on experiences. Our students can sit together and do some projects. We can think of maker spaces where they work on some projects. In short, we need to think of meaningful blend of online and offline experiences. When we think of a topic, we have many resources. We may have our small videos. We may have interactive videos. We may have some web resources, TED Talks, sometimes virtual labs, and we may have many collaborative online activities. We may have books, PDFs. Why not audio podcast files, which we can push on smartphones? If we have so much of variety in resources, then we can plan accordingly. We can plan a blend of some experiences which are technology based, but we can also plan for some group activities, cooperative learning strategies inside our classrooms, and then decide for which part I want to share resources with students. Once they go through resources and come back to the class, what do I do in the classroom? Can my classroom interactions be meaningful, effective, interactive, interesting? So, okay. So what is the understanding you people must be having about this? So blended learning is not cutting the cake into 60-40. It's blending of the teaching learning experiences in online and offline. Okay. तो ब्लेंडेड लर्निंग के लिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास वो चीज तो मिल गई, मतलब जो है तो क्या नाम है इसका, रिसोर्सेस तो मिल गई, और रिसोर्सेस मिलने से काफी नहीं है, रिसोर्सेस के अलावा और भी 2-3 जो चीज हमें चाहिए, वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि ये कहाँ से शुरू करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है इसको यूज करेंगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को करने के लिए हमारे सामने 2-3 ऑप्शंस है। एक नंबर 1 Genomio.com। Genomio.com एक फ्री मूडल क्लाउड है, ये फ्री मूडल क्लाउड है। इस फ्री मूडल क्लाउड को जरूर आप यूज करने की कोशिश कर लीजिएगा। इसके अंदर भी काफी अच्छे मतलब आप इसको रिकॉर्ड कर, इसको आप अपने नाम से साइट वगैरह डेवलप करके इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन है कैनवस। तो कैनवस को इस तरीके से फ्री में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, ट्राई कैनवस की ऑप्शन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वर्डप्रेस। आई होप यू हैव बीन नोटिंग डाउन ऑल दिस थिंग्स बिकॉज योर कैमरास आर ऑफ, सो आई डोंट नो वेदर यू आर नोटिंग डाउन ऑल दिस थिंग्स। सो ये साइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा।
So WordPress is one such very important site where you can get good quality learning management system can be generated. And the next important thing is Google Sites. कई बार लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि सर ये Google Site को एक्सेस कैसे किया जाता है. Google Sites को एक्सेस करने के लिए एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है, आप अपने मेल पे जाइए. मेल पे जाने के बाद एक आपको देखिए गूगल एप्स का करके 9 डॉट्स आपको दिखेंगे. इफ यू क्लिक ऑन दैट 9 डॉट्स, देन यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखेगा, वो उस ऑप्शन का नाम है साइट्स. ओके, जब आप इस साइट्स को ओपन करेंगे एंड आप इसके बाद देन आप इसको बहुत सिंपल तरीके से, मतलब आपको एक ब्लैंक साइट चाहिए तो ब्लैंक साइट बना सकते हैं. एक फैमिली अपडेट है, पोर्टफोलियो है, इवेंट्स है, तो बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है. मैं आपको एक हमारे नीपा का एक इंट्रोनेट साइट दिखाता हूँ. एंड हमारे नीपा का इंट्रोनेट साइट जो है सिर्फ nipa.ac.in जिनके पास ईमेल अकाउंट है उसी से खुलता है. ओके, अब देखिए मैंने ये कोई भी बना सकते हैं. जैसे मैंने कई बार लोग मुझे कहते हैं सर आपके वेबसाइट जैसा बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. कुछ नहीं, देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है. इसमें देखिएगा यहाँ जो आप सर्कुलर से नोटिफिकेशन है, स्टूडेंट कॉर्नर है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है वो सारे चीज आपको यहाँ मिलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन. ओके, सो इसके अंदर ओनली प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए आएगा. तो एक तो ये ऑप्शन है. तो कई बार लोगों को ये भी लगता है कि सर इसके अलावा और कौन सा मैं कंटेंट, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल क्लासरूम. आप सबको पता है, जब आप गूगल क्लासरूम को एक बार क्लिक करके आप कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा. ऑलरेडी बहुत लोगों ने आप में से दे मस्ट हैव बीन यूजिंग द गूगल क्लासरूम. You see, I'm using Moodle, I'm using Canvas, I'm using WordPress, I'm using Google Sites as well as I'm using the Google. बहुत मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, ये सारे आसान है. मतलब it's not so difficult to learn these things. But what is more important to me that how you are going to use these platforms. That is very very important to me to understand to this, because it's not simply having a website is not important, but again you have to take this one to a different level, because you need to connect this one with the online and offline mode of environment. That is more important, need to be understood as such. Okay, okay, all these things are fine, but there are few important things I wish to bring to your kind attention. इसके अंदर टीचर है, इसके अंदर स्टूडेंट है, इस स्टाइल के एनवायरनमेंट में. सो व्हाट इज द टिपिकल रोल टीचर इज गोइंग टू प्ले. अब एक बार इसका स्क्रीन की तरफ देख लीजिएगा. सो नॉर्मल लेक्चरिंग वाली कहानी अब धीरे धीरे खत्म हो गई, समझ लीजिएगा. अब हम सिंपली टेक्स्ट बुक के मटेरियल को एज इट इज पढ़ाएंगे, saying that there is no creativity, there is no innovation, and very importantly no value addition. So naturally, I think students will not like those teachers. Please try to understand that. So we must change our role as a trainer and guardian, and also we can create design and supporting of the teaching learning environment. उसके लिए तो हमें क्या-क्या चीजों को करना है, सबसे important. अभी देखिए मैंने आपको वीडियो दिखाया, एंड सिंपली वीडियो से कुछ नहीं होगा, बट उस वीडियो की तरह लंबा चौड़ा वीडियो को स्टूडेंट्स को देने से तो स्टूडेंट्स में नॉट बी लाइकिंग इट, क्योंकि वो जमाने के बच्चे हैं. तो ये फेसबुक शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स के जमाना है. सो यू नीड टू मेक इट मोर क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग and designing the new learning experiences. That's very very important. So consistently which I have been doing for many years is I at least 2 से 3 दिन पहले मैं स्टूडेंट्स को रिसोर्सेस प्रोवाइड करता हूँ, ताकि ये लोग, मैं ये कहता हूँ पढ़ के आया करो मेरे क्लास में. After coming to my class, and what the first thing is, I'll be transacting what they have been discussing prior to that. Okay, that is very very important to be understood. जब तक इस तरीके के माहौल को क्रिएट नहीं कर पाओगे, then it will not work. So only टीचर प्रिपेयर होने से तो नहीं, टीचर के साथ साथ the students also need to be prepared.
The first and foremost thing is we are making the learner as a responsible learner in this environment. So responsible learner का मतलब ये है कि it's a proactive learning है. Student has to take the self learning and peer learning environment seriously. तो उसके लिए माहौल खड़ा करना टीचर का काम. Number 2, and second important thing is problem solving experiences. So generally कई लोग passive listener रहता है. अभी देखिए मैंने आपको आई एम वेरी हैप्पी आउट ऑफ 66 or 67 people, at least 15 people are very consistently answered that. बाकी लोगों ने जवाब ही नहीं दिया था. मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे, ठीक है चल रहा है, ये कोई यूजीसी का ओरिएंटेशन है, बट कल के दिन मेरे जैसे बंदा आपके कॉलेज में आएगा, आपके यूनिवर्सिटी में आएगा, एंड यू योरसेल्फ विल कम टू मी सेइंग दैट सर आपने तो हमें ये चीज पढ़ाया था. So what is the question I'm going to ask you? You know, आपने तो सीखा तो था, but what you want to implement? So don't treat this as some certificate मिल गया यूजीसी की तरफ से, क्या इस सर्टिफिकेट से हम क्या करेंगे? But बहुत सारी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें से कुछ चीज हमारे कंट्रोल में है, हम कर सकते हैं. And third important thing is the decision maker. So students के पास देखिए, जब अभी पता नहीं किसके दिमाग में ये चीज आया था, people have been saying that when the student comes to the face-to-face university only the learning happens. It will be very difficult for 135 करोड़ आबादी वाले देश में everything we can start with a brick and mortar. But what is important to me that when the student comes to the face-to-face classroom, he learns from the teacher. In online environment also that is possible. But the difference is, in the online environment, there is a recorded lectures. But the recorded lectures, if you make it creative and innovative, then the students will see. Second important thing is, when the student comes to the class, he learns from the fellow friends. In the online environment also, there is something called collaborative learning. इन सारी चीजों को एक बार करने की कोशिश करना चाहिए हम लोग. नंबर 3, एंड यहाँ जो है, the students can go to the library and physically anything, यहाँ भी ऑनलाइन में भी हो सकता है. तो प्रॉब्लम इज ऑनलाइन लर्निंग खराब नहीं है, बट ऑनलाइन लर्निंग को जिस तरीके से लोगों ने अपनाया था वो गलत था. And similarly, now today in my university, the Honorable Higher Education Secretary came and he has been telling that now more and more institutions were given the responsibility. अब हमें हम सबसे कह रहे हैं कि आप इन लोगों को थोड़ा blended mode में पढ़ा दीजिएगा. So what is important here is, if you could able to see, it's an advantage for the students first. कैसे advantage है? 50% of the credit students can take from the Swayam courses. अब कम से कम 80 से 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता स्वयं कोर्सेस को कंप्लीट कैसे करना है, कैसे लेना है. सो माय पॉइंट इज दैट आपने कुछ कंपोनेंट, आपके जो कोर्स के कुछ कंपोनेंट जो है ऑनलाइन एनवायरनमेंट में ये ब्लेंडेड मोड में पढ़ाने की कोशिश किया था. नेचुरली टुमारो आप स्टूडेंट्स को ये कह सकते हो, भाई ये है वीडियो मटेरियल, इसको ऐसे पढ़ना है. हाउ टू फॉलो द लेसन हमें बताना पड़ेगा. अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता इस देश में, टीचरों को खुद को नहीं पता, अलग बात है. ओके, सो हाउ टू फॉलो द वीडियो लेक्चर. क्योंकि अभी हमारे परिवार में किसी के साथ हुआ था कि इसने ज्वाइन कर लिया कोर्स. ज्वाइन करने के बाद 1 महीने के बाद मैंने पूछा था, बेटा वो पढ़ाई कैसे चल रही है मूक्स की. तो उन्होंने एक ऐसे सवाल पूछा था, अंकुल जी आपने ज्वाइन करने के लिए, कहता मैंने ज्वाइन कर लिया था, उसमें मुझे कुछ करना है क्या. I think even though that answer was an innocent answer, I think that gives a lot of things to retrieve. We need to think seriously. And we never told the students that how to participate in the discussion forum. क्यों? Because हमने कभी Jamboard use नहीं किया था, हमने कभी Padlet use नहीं किया था, हमने कभी Miro use नहीं किया था. तो Jamboard जैसे environment को create कर दो. ज्यादातर केसेस में हम पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन का ही बात कर रहे हैं, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात क्यों नहीं करते. सिंपल क्विजी बहुत अच्छा सिंपल सॉफ्टवेयर है, एडपजल एक सॉफ्टवेयर है, नियरपॉड एक एप्लीकेशन है, लूमी फॉर एजुकेशन एक एप्लीकेशन. इन सारे चीजों को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते. बिकॉज आई थिंक दीज आर ऑल द थिंग्स. मतलब अभी 2 घंटे के सेशन में सारे तो नहीं हो पाएंगे,
But what I am trying to say that whatever best it is possible, we could able to provide to you. And I think, friends, at this point of time, I'm stopping it. I'll be showing few important things. One of the I think आप इसको एक बार बाद में भी try तो कर लीजिएगा. सबसे important वाली बात है वीडियो है, text material है. Don't provide the video and text material straight away to the learners. There is a site called @puzzle.com. There is a site called @puzzle.com, which is a very interesting and important site. इसके बारे में एक छोटा सा क्योंकि @puzzle के बारे में कई बार लोगों को डाउट है, मैं थोड़ा सा एक इसके बारे में बताना चाहता हूँ. देखिए. How to get the most of Grammarly free. What is this @puzzle is all about? To tell you all about the free. How to do almost everything through video. Kids these days are learning how to do almost everything through video. Videos feel personal, are highly visual, and let you control the pace at which you learn. But when you try to show a video in class, you might not always get the best results. Sometimes it's hard to know if students are paying attention or if they're So let me stop this one. So what is in the nutshell I wish to say as far as this ICT session is concerned. The number one, you must be a good subject expert. All these things are possible if you are a subject expert and exposed to the learner-centric pedagogical approach and good technical skills. और कई बार लोग ये कहते हैं कि टेक्निकल स्किल्स का मतलब बहुत सारे चीजों को करना है. नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. देयर आर सिंपल टेक्निक्स. मैंने आपको बताया था कि गूगल ड्राइव को यूज करने का, सर्चिंग ऑफ द कंटेंट, एंड एट दिस व्हाटएवर बेस्ट इट इज पॉसिबल, आप टेक्स्ट बुक को एज इट इज इसको करने से बजाय ट्राई टू क्रिएट एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एनवायरनमेंट. और एक इंपॉर्टेंट वाली बात मैं बताना चाहता हूं आप सबको. It's not the technology it matters, it's the teacher matters. First of all, the technology is supporting the teaching learning process, not the other way around. Okay, so try to see that. अभी इसके लिए तो एक अभी इस वर्कशॉप आपके 8 दिन का खत्म होने के बाद एक प्लान बना दीजिएगा. अगले 3 महीने में मुझे क्या करना है, अगले 6 महीने में किस तरीके के चेंजेस को लेके आना है. If you're not adopting the change, you will become obsolete. और वो मैं ये देखना नहीं चाहता टीचर के हालत जो है एम्बेसडर कार की हो गई, नोकिया फोन की हो गई. और एम्बेसडर कार इज द बेस्ट कार, नोकिया फोन इज द बेस्ट फोन, बट समय पे उन्होंने चेंज को अपना नहीं पाया. एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब ये मत देखना कि ये नहीं कर रहे, कानपुर खलान वाले नहीं कर रहे, या जीजेयू वाले नहीं कर रहे, या हिसार वाले नहीं कर रहे, या रोहतक वाले नहीं कर रहे. कोई करे ना करे, we are the teachers, we should do our best. That's all, friends, I wish to say, because there is another meeting was lined up at 5 o'clock. So I stop it here. If you have any quick questions, 1 or 2, I'm happy to answer. If there are any questions, you may please ask. Otherwise, we will wind up within 2 minutes. So indeed, we are very thankful to you, sir, for always, as usual, a very enriching session, something new to learn. And today it was a practical session. Means those who must have been attempting. ये गलती आपने किया था 2 सेशन देके. नहीं तो हवाई सर्वेक्षण करवाने वाला था मैं. एक ही सेशन में सिर्फ हवाई सर्वेक्षण ही होता है. जी, बिल्कुल ठीक बात है सर. आईसीटी के लिए तो एक सेशन हमेशा ही कम है. थियोरेटिकल सेशंस आर ओके. कि अब ना सर हमें दिक्कत ये होने लगी है कि we have started asking for 1 session because the resource person has started refusing for 3 hours in an online mode. They are saying it is too much tedious and tiring. We cannot speak for 3 hours literally. जैसे अभी आप शुरू में बोल रहे थे ना कि अब तो मुझे आदत हो गई है ब्लैंक स्क्रीन्स को देखकर बोलने की. बिल्कुल सही बात है. इन्हीं लोगों ने सिखाया वो ही चीज.